It is day 19 of the farmers' protests, and farmers are just in no mood to relent. Upping the ante against the centre, the farmers have begun their 9-hour hunger strike. They're going to be sitting on a hunger strike until 5 p.m. today. The protesters have decided to sit on dharnas at Delhi borders and outside district magistrate offices across the country. The farmers are going to continue their protests at Singhu, at Kondli, at Tikri, at Palwar and Ghazipur borders of Delhi. The agitating farmers continue to demand rollback of 3 new farm laws. They also want the government to make a law which guarantees MSP. The farmers are protesting the proposed electricity law and want the government to stop harassing them over the stubble burning as well. आज जो रणनीति है, जितने पंजाब के डीसी है उनका मुकम्मल तौर के हम घेराव करेंगे। जो 10 जथेबंदियां भी आज भूख हड़ताल में बैठ रही है उनका हम समर्थन करेंगे। हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पर जो जथेबंदी में जो सरकारी अफसर आते बैठने में, जो लीडर आते हैं उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो काले कानून वापस ले जाएंगे। वो तो आते हैं पे हम आपको समझाएंगे इसमें क्या है। हमने पूरा समझा इसमें क्या है, जो हमारे पूरा गलत है। हम ये मोदी को बताते हैं, मोदी जी आप खुद मीटिंग में आओ और इनको कानून को वापस ले जाओ, फिर हम मीटिंग में जाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं मीटिंग में जाने का। It's day 19 of the protests here at the Singhu border, and the farmers are not ready to relent after several rounds of talks with the government. Today, the farmers are set to hold a day-long Bhook Hartal here at this Singhu border as well as other borders across Delhi to register their protest against the government, which is refusing to accept their demands of rollback of the 3 farm laws as well as their demands regarding the electricity bills and crop burning fines. Well, let's also try and speak to some of them. Sir, यहाँ पे आज आप लोग भूख हड़ताल अनशन पर बैठ रहे हैं, क्या डिमांड है? आज आप लोग जो अनशन पे बैठ रहे हैं उसमें क्या डिमांड है? देखिए, डिमांड कल भी वही थी, आज भी वही है। लोकतंत्र में अपनी बात को मनवाने के अलग अलग तरीके हैं। ये भी उनमें बहुत सारे तरीकों से ये तरीका है कि आपके माध्यम से शायद प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुन ले, भी किसी के कानून वापस कराने के लिए आज का आंदोलन चले। So for the entire day, these farmers are going to be sitting here at the Singhu border in a Bhook Hartal as a token protest to show that they are not ready to back down. It is the government which must come forward and talk to them and accept their demands. With cameraman Nasir, this is Anisha Mathur at the Singhu border for India Today. Adamant. ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 5 ਦਿਨ ਬੈਠਣਗੇ, 4 ਦਿਨ ਬੈਠਣਗੇ, ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ, ਅੱਜ ਲੈ ਲਵੇ, ਕੱਲ ਲੈ ਲਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ। ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। Undeterred. गवर्नमेंट के दिल में जी गलत भावना बनी हुई है। वी आर द टेररिस्ट, वी आर द खालिस्तानी, वी आर डूइंग आवर वर्क विद ऑनेस्टली। Prepared for a long haul. ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। Protesting farmers unwilling to give up without a long-drawn fight. Upping the ante against the centre, farmers staged a Delhi Chalo march from Rajasthan's Shahjahanpur through the Jaipur-Delhi highway. You can see a unit of farmers' unions made tent here, and they are addressing all the farmers about their next strategy. And as the farmers' union said that today they will block Delhi-Jaipur highway, and on tomorrow the protest will intensify in all districts, and they will follow sit in all districts area. On Monday, farmers will gather outside district administration offices across India, followed by a hunger strike. On Tuesday,
women and laborers will join the protest. सारे संगठनों के जो मुखिया लोग हैं, जितने भी संगठन इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, भूख हड़ताल रखेंगे सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक। जहां जहां भी वो जिस इलाके पे हैं, सारे देश में धरने देने का प्रोग्राम है। सारे जिला हेडक्वार्टरों पे जो है वो धरने देने का प्रोग्राम है, वो सुबह से शाम तक। आई एम हेयर फॉर फार्मर्स, supporting farmers. We only want that Modi should take this bills back. सर्दी पड़ रही है, बच्चे हैं साथ में। नहीं कोई बात नहीं, जब सभी हम एक साथ हैं तो किस बात की चिंता। ਸਾਨੂੰ चिंता नहीं होनी चाहिए, मोदी नहीं सोचना चाहिए, बच्चे साडे नाल आए हुए आ रहे, ਉਹਨੂੰ दिखना चाहिए। So far, the blockade at Delhi's Ghazipur, Palwal, Tikri and Singhu borders continue. The Chilla border between Delhi and Uttar Pradesh reopened on Saturday after being shut for 12 days. From Monday, the farmers have announced to sit on fast protest. At the same time, there will be massive protests on the district headquarters where the farmers will submit memorandum. The farmers are not going to step back. The government may hinted there could be some amendment. The farmers only want withdrawal of these laws and MSP should be guaranteed in a new and fresh law that government needs to bring. The life here on street is very difficult, but they believe their fight is for their right. At Delhi Ghazipur National Highway, with Nasir, this is Ashutosh Mishra reporting for India Today. Anisha Mathur now joins us live for the latest on this. Anisha, the protests are intensifying. It's very evident with the hunger strike as well, and the farmers now say that the government delaying the matter. What are you picking up at this point of time from the farmer union leaders? Well, the farmer union leaders are very steadfast in their demands, and that they have been repeating for the last month now, or more than the last month now. And you can see here now, I'm going to ask Nasir to pan around and show you. The farm leaders have now sat down on a bhukh hartal here at the Singhu border today, and they are saying that this kind of dharnas are going to be done at district headquarters across the country from today, to ask the government, to show the government that they are very, very serious about their demands. They want a rollback of these 3 farm laws. They want a guaranteed MSP. They want the rollback of their electricity bills, as well as the cancellation of the fines that were set up with regard to crop burning. Until the time they get all of these demands, they are not going to back down. And they're also very clear that the multiple meetings with the government have not worked out, because the government is also taking a stand that their farm laws are in fact for the good of the farmers. So it is very clear that we are heading towards, while we've already had 19 days of protests on the Delhi borders, it's clear that they are not going to back down anytime soon. Let's also try and speak to some of them. Uncle ji, आप लोग इतने दिन से यहाँ पर हैं, आज ये धरना इस तरह से करा जा रहा है। 10 दिन हो गए। आज ये जो 2.5 महीने हो गए। हाँ जी, 2.5 महीने हो गए। जी, अब मैं ये पूछ रही हूँ, सरकार कह रही है कि ये लॉज जो है, ये कानून जो है, ये किसान के फेवर में है, ये खिलाफ नहीं जाएंगे। ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਪੀਣ ਦਿਓ, ਪੀਣੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਨਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ, ਨਾ ਉਹ ਯੈਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਨੋ ਕਰਦੇ, ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਲੋਗੇ ਵਕੀਲ ਦੋਵੇਂ ਬਣੇ ਭਿੜ ਝਾਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਾਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ? ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਵਿਚਾਰ 5-6 ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ, ਜੱਜ ਮਗੋਂ ਸੁਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਿਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਕੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਨਾ ਫੱਟੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ, ਨਾ ਯੈਸ ਜਾਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਗੱਲ ਮੇਨ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਾਡਾ। So you can see it's very clear. Every farmer here at the Singhu border has this one demand, that the government must give a yes or no answer. There is no negotiation possible, because they will not back down without complete rollback of all these laws. Back to you. Continue to stay with us right there, Anisha. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.